बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड वंस अगेन अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। उम्मीद रखता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। आज मैं साहिबजादा हैदर जान एक दफ़ा फिर अपने लाइव सेशन में आप लोग के साथ हाजिर हूँ। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि गुज़िश्ता कई प्रोग्राम के सिलसिले में हमने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है 2021 में रह के, और अभी 2022 स्टार्ट हो गया। वुमेन एम्पावरमेंट की पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में बात होती रहती है, तो मैंने भी ज़रूरी समझा कि इस टॉपिक पे कुछ ऐसे प्रोग्राम्स करूँ, ऐसे लोगों के साथ करूँ, और ऐसे एरियाज के लोगों के साथ करूँ कि हमें पता चले। यहाँ पे एक दफ़ा फिर मैं क्लियर कर दूं कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इस्लाम ने औरत को जो मुकाम दिया है, जो इज्जत दिया है, जो डिफाइन फ्रेमवर्क है औरत के लिए, उसकी मिसाल कहीं पे नहीं मिलती। खैर, हम बात करेंगे वुमेन एम्पावरमेंट की, और आज मैं खुसूसन बात करूंगा बलूचिस्तान, पाकिस्तान का सूबे बलूचिस्तान के वहाँ चैलेंजेस क्या है फीमेल को, और जो वहाँ की औरतें हैं उसको सोशल वर्क में एज अ प्रोफेशनल लाइफ क्या क्या चैलेंजेस आती है, और अगर वो चैलेंजेस है, प्रॉब्लम्स है फॉर देम, तो वो लोग कैसे मैनेज करते हैं उस चैलेंज को, और कैसे जो है हालात का मुकाबला करते हैं। टुडे आई हैव रिक्वेस्टेड ऑल द वे फ्रॉम बलूचिस्तान नादिया शौकत, जो कि सोशल वर्कर इन बलूचिस्तान और खुद भी एज ए स्टूडेंट है। सो नादिया, वेलकम टू द शो एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। Thank you so much, Saibzada Idarjan, for this kind honor for interviewing me. अच्छा, Thank you so much. नहीं नहीं, थैंक यू सो मच एंड इट्स ऑनर कि मैं बलूचिस्तान के बिंग यू आर नाउ रिप्रेजेंटिंग पाकिस्तान इन बलूचिस्तान के मैं बलूचिस्तान के एक रिप्रेजेंटेटिव से बात कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आपसे यही पूछूंगा कि नादिया, अगर खुद, मैंने तो कह दिया एज सोशल वर्कर और एक स्टूडेंट है, अगर खुद अपना इंट्रो थोड़ा सा तफसीलन देखने वालों को बता दे कि नादिया सोशल वर्क में क्या करती है और क्या पढ़ती है, तो फिर आगे जाते हैं। जी ज़रूर। ओके, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नादिया शौकत। मैंने अभी अभी अपना एपीएससी क्लियर किया है और फर्दर लॉ स्टडी करना चाहती हूँ। एंड बिसाइड्स दिस मैं सोशल वर्किंग में इंडल्ज हूँ। लाइक यान जो है लाहौर का एक प्लेटफॉर्म है, उसमें वॉलंटियरिंग करती हूँ। बल्चिस्तान यूथ एक्शन कमेटी जो कि सिकंदर बिजन जो उसका मेंबर है, मैं उसमें मेंबरिंग करती हूँ। एंड इसके अलावा जेरी ऑनलाइन जो कि कुछ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, मैं उसमें काम करती हूँ एज अ वॉलंटियर एंड एक स्टूडेंट टू। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। कुछ मैंने जो मुझे समझ आए, जो बलूचिस्तान के डिफरेंट एनजीओज, बलूचिस्तान के जो डिफरेंट नॉन वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन है, यू आर इन टच विद देम और आप सोशल वर्क वहाँ पे कर रही है। नादिया, अगर मैं आपसे पूछूं जो बलूचिस्तान के बारे में, आई एम सॉरी मैं बिफोर बलूचिस्तान के अवाम से, लेकिन एक आम तासुर है कि बलूचिस्तान जो है बाकी पाकिस्तान से तरक्की के लिहाज से उस फेज में नहीं है, और वहाँ के जो वुमेन्स है, वहाँ की जो औरत है, उसे प्रोफेशनल लाइफ चैलेंजेस उनको बहुत ज्यादा आ रही है। व्हेन इट कम टू, इवन अगर मैं टेक्नोलॉजी की बात भी कर लूँ तो वो भी एक चैलेंज है, लेकिन एज अ प्रोफेशनल वुमेन, एज ए सोशल वर्कर, एज अ फीमेल, क्या चैलेंजेस फेस करते हैं बलूचिस्तान के फीमेल, बलूचिस्तान के औरतें? आप अपने अल्फाज में बता दें। वेल, हम 21st सेंचुरी में हैं, लेकिन एज हमें इतना प्रोग्रेस होना चाहिए, हम उतने अंदाज में प्रोग्रेस नहीं है। वी आर नॉट दैट मच प्रोग्रेस that we should be, and being in 21st century there are multiple problems that the Baloch women are facing today. If I should highlight three, then I would better prepare education, हेल्थ के सेक्टर्स हैं। एजुकेशन एज हम कहते हैं कि बल्चिस्तान के हर रीजन में जो फीमेल्स है वो तालीम हासिल कर रहे हैं, मगर ये थोड़ा गलत होगा ये बात, क्योंकि इफ आई टॉक अबाउट एजुकेशन ऑफ फीमेल इन बल्चिस्तान, देन अ वेरी लेस पॉपुलेशन, even not our population, a very less population of Baloch women are educated, and they're engaged in professional life or the professional works. And mostly these women are from the cities of Balochistan like Turbat and the Makran areas.
the जो दयाती एरियाज हैं वहाँ के औरतें डेट मच एम्पावर्ड नहीं हैं, वो दे आर नॉट गेटिंग देयर बेसिक एजुकेशन। लाइक कुछ ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने मेट्रिकुलेशन के बाद तालीम छोड़ दिया, कुछ ऐसे वुमेन्स हैं जिन्होंने इवन दो मिडिल क्लास 8 के बाद they left their education, and the reason is that they could not make their approach to schools because after matriculation there were no colleges there in their own regions. For attending colleges they should travel to cities, and they could not afford the transportation expense. Due to this they left school. And if I talk about class 8 students, then there are some villages of Balochistan where there is no even school. If there are schools, then that schools are not well constructed. There are no teachers. There are not any facilities. So that's why the, and even though there are not schools for females, so that's why from class 8 the female leave their education and they could not go further for studies. एंड अनदर थिंग जो है बलोच वुमेन फेस करते हैं हेल्थ के हवाले से, मैं कहूँगा कि हेल्थ जो है बलूचिस्तान के वुमेन्स के लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज है। हेल्थ इज अ बिग चैलेंज फॉर बलोच वुमेन, एंड another challenge that they are there is a threat for them, that is child marriage. Child marriage is a very common and a very big challenge for women, as in a very young age they are married. Due to marriage they leave their schools, so child marriage is a big challenge for Baloch women. And education and these things never leave let the Baloch women to be professional and to join social working, and because they are not given the space, they are not given the opportunities to be professional or to join social working. That's आजा आजा अगर मैं यहाँ पे वेरी वाइंड अप और वेरी क्विकली उठाऊं, द फर्स्ट वन इज एजुकेशन। हम बात करें वुमेन एम्पावरमेंट की और वुमेन एम्पावरमेंट एंड बलूचिस्तान स्पेसिफिक, आज हम बलूचिस्तान के बारे में बात करेंगे। और जैसे कि नादिया ने कह दिया, एजुकेशन, हेल्थ एंड चाइल्ड मैरिज, अर्ली चाइल्ड मैरिज। अच्छा, अगर इन तीनों में से मैं उठा लूँ एजुकेशन को, और यहाँ पे मैं अपना ही कमेंट दे दूँ कि फेडरल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और एक तालीमी इमरजेंसी नाफिज करने का, एक तालीमी इमरजेंसी की आवाज़ थी, और अभी गवर्नमेंट का ऑलमोस्ट 3.5 ईयर हो गए। मैं यहाँ पे क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर एज ऑफ टुडे 2021 या 2022 में बलूचिस्तान का ये हाल है, तो ये एक बहुत अफसोसनाक और एक शर्मनाक हद तक बात है कि वहाँ पे लोग पढ़ना चाह रहे हैं लेकिन प्लेटफॉर्म नहीं है, प्लेटफॉर्म है तो टीचर्स नहीं है, जी। टीचर्स है तो फैसिलिटीज नहीं है, फैसिलिटीज है तो उसका एक्सपेंस उन लोगों के पास नहीं है। और हुकूमत वक्त का ये जिम्मेदारी बनती है कि वो हर बंदे को एज पर द लॉ, कानून भी हमारे यही कहता है कि वो एजुकेशन प्रोवाइड कर ले। नादिया, अगर मैं सिर्फ एजुकेशन की बात को उठा लूँ इन चैलेंजेस में, तो क्या कहेंगे, क्या इकदामात बलूचिस्तान हुकूमत, फेडरल हुकूमत उठा सकती है कि जो स्पेसिफिक मैं एजुकेशन की बात करूँ, मैं हेल्थ और अर्ली चाइल्ड उस पर नहीं, स्पेसिफिक मैं एजुकेशन की बात करूंगा, तो क्या इकदामात हुकूमत उठा सकती है? स्कूल बिल्ड करे, रिसोर्स प्रोवाइड करे, आपके ख्याल में क्या सोल्यूशन हो सकता है एजुकेशन के मसले का? Okay, so we start करेंगे from primary sections. The first step the government should take is they should build schools, they should construct classes in all the villages of Balochistan where there is no any class for students. They should construct students classes, not just classes, they should also facilitate those classes with whiteboards or with chairs, with everything that a school needs. And second thing is and second and the main thing is they should also give teachers there, because in my own village there the government built two classrooms for these students, but unfortunately there is only one teacher who is teaching from 1 to 5th class students. It is very tough task for that person, and like one teacher cannot teach all of these students in a very very well manner because she cannot focus on all these students.
So the first task the government should do is should build classrooms. Along with classrooms, it should give teachers and it should facilitate those classrooms. And after, if there should be classes from 1 to metric in all the villages. As in villages, there are only classes for 1 to 5th, or in some villages, there are only classes for 1 to 10th. So the government should construct classes for 1 to 10th, and after matriculation, most of the students girls leave their education because they have transportation problem. So the government should arrange bus and such things for them that the students should can approach the cities for the colleges and all of these things. Transportation is a big problem, so the government should also focus on this problem, like by managing buses or other things. If they can, they should build colleges in their own villages. If this cannot be done, then at least they should provide bus to the girls so that they can move to the cities for their education. अच्छा, मैं यहाँ पे ऐड कर लूँ, रिसेंटली आई मीन टू से लास्ट कपल ऑफ ईयर्स से मैं मर्दान में देख लूँ, डिस्ट्रिक्ट मर्दान खैबर पख्तूनख्वा की मैं बात करूँ, जहाँ पे पिंक बस सर्विसेज फॉर फीमेल स्पेसिफिक जो है, और खासकर अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से वो हो के जो भी 10-20 किलोमीटर्स नियरेस्ट स्टॉप है वहां तक जाती है. तो such kind of facility shall be given to the each and every corner of the country, like corners like Balochistan. और अगर मैं नादिया का जो मैंने एजुकेशन चैलेंज के साथ कैसे कोप किया जाए उसकी बात करूँ तो, और उसको समराइज करूँ तो, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लासरूम बिल्ड, स्कूल बिल्ड, और सेकंड शी सेड रिगार्डिंग द रिसोर्स अवेलेबिलिटी. तो अगर रिसोर्स और इंफ्रास्ट्रक्चर हुकूमत दे दे तो ट्रांसपोर्टेशन के इशू खुद ब खुद सॉल्व होके वो आउटसोर्स भी हो सकता है, और लेकिन गवर्नमेंट की अटेंशन जो है वो जरूरी है. एजुकेशन इज द बेसिक नीड. नादिया, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. लेकिन अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि सिर्फ स्पेसिफिक ये क्वेश्चन बलूचिस्तान के नहीं, ओवरऑल पाकिस्तान की जितनी भी इमर्जिंग सोशल वर्कर है, जितनी भी इमर्जिंग फीमेल्स है जो आना चाहती है, स्टेप लेना चाहती है और आगे बढ़ना चाहती है, मुल्क के लिए कुछ करना चाहती है, क्या मैसेज देंगे? जो हार्डल्स वो फेस कर रहे हैं उसके साथ कैसे कोप किया जाए? मैं जनरल बात करूं, व्हाट विल बी योर मैसेज? Okay, it is a way. I must say that being as a woman, I've experienced that it is a very tough task to be a woman. You will receive endless criticism. You will given lots of responsibilities. But being a woman and being socially active is the toughest task a person will ever face. It is very hard. You will receive lots of critics from the people. They will criticize you. They will always try to drag you down or drag you back. And sometimes, even though at every corner you will not get any support, but I would suggest them that try not to give up. If once you have stepped forward, then try not to step backward and it's don't stop. Always try and always try to do such things which should catch the attention of people toward you in a positive manner. Be positive and support them and never don't oppose them, but do such things that they should not, that things should not let them to oppose you. Always be positive and try to be courageous and never give up in someone's criticism. Never give up when someone will say you bad word or when someone will drag you down. At last I will say them, if you have a step front, then try to step more. Don't come back and never see the backside. That's all. दैट्स सो वंडरफुल. और अगर मैसेज का मैं दोबारा ही रिपीट कर लूँ, बहुत अच्छे अल्फाज हैं. पूरा मैसेज जो है पूरे पाकिस्तान के जितनी भी इमर्जिंग गर्ल्स है, इमर्जिंग वमेन जो कि मुल्क के लिए कुछ करना चाहते हैं, इट कम टू स्टडीज या सोशल वर्क के हवाले से या और भी जो भी प्रोफेशनल है, सो ऑलवेज बी पॉजिटिव. मैं नादिया का ही मैसेज रिपीट कर रहा हूँ, ऑलवेज बी पॉजिटिव.
ایک پازیٹو امیج اپنا آپ کا آگے پیش کرے، اپنے ملک کا ایک پازیٹو امیج آگے پیش کرے، اور کبھی جو ہے کسی کے کرٹیسزم اور کسی کے اگر کوئی ڈی موٹیویٹ کرے تو اس کی وجہ سے پیچھے نہ بھاگے، پیچھے نہ جائے، بلکہ اگر کوئی کرٹیسائز کر رہا ہے، اگر کوئی جو ہے غلط کر رہا ہے اور آپ کو پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے، تو ٹیک ٹو اسٹیپ انسٹیڈ آف گوئنگ ٹو اسٹیپ ایٹ اے بیک. So, with this note, Nadia, thank you so much for joining all the way from Balochistan. Inshallah, we'll be in touch, and future میں ہم دوبارہ ہی آپ سے بلوچستان کے بارے میں، انفیکٹ پاکستان کے بارے میں، اور خاص کر بلوچستان کے بارے میں جو ہے آنے والے پروگرام میں ضرور آپ کو زحمت دیں گے اور بات چیت کریں گے. But for today, thank you so much for joining. Thank you so much for this honor. Thank you. تھینک یو اینڈ ود دس نوٹ کہ اپنا خیال رکھے، اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھے، اور آج جاتے جاتے ایک دفعہ پھر جو ہمارے آج کے گیسٹ نے جو میسج دیا ہے کہ بی پازیٹیو، اور اپنے اور اپنے ملک کا ایک اچھا امیج پیش کرو، اپنے ملک کے لیے کچھ کرے. ود دس نوٹ مجھے صاحبزادہ حیدر جان کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.